Hello everyone, this is Dr. Omahani Khan, and I hope you all are in the best of health and spirits. Today, I'm here with a case that truly challenged my perspective, leaving me to wonder, am I missing something, or is the patient leading me into a maze of their own? Of course, this thought comes from a place of humility and curiosity rather than judgment. But before we dive into the twists and turns of this fascinating case, let me share something vital, something that can transform your approach and help you prescribe with precision from the very first attempt. So, what's the secret? Observation. Yes, the key lies in observing the patient not just when they sit before you in the consultation chamber, but from the very moment they step into your world. Whether they're waiting in the reception area, walking through the corridor, or interacting casually with others, they are already offering you breadcrumbs, clues that can light your path during case taking. Eyes that see, but don't perceive, miss the whispers of the universe. So train your eyes and your heart to observe silently, even from a distance. You'll find that the patient unknowingly narrates parts of their story before they even begin to speak. And these moments can make all the difference, turning challenges into opportunities and confusion into clarity. Now, let's unravel this case together, step by step, moment by moment. Stay with me because this one's going to leave you inspired. It was around 8 p.m., a quiet, dark evening outside. The streetlights barely illuminated the road, and I could only make out faint silhouettes in the distance. Suddenly, I noticed a man standing near my clinic with a child asleep in his arms. He stood there for a while, motionless, as if he were pondering something. Curious, I wondered why he was lingering outside. As I focused on him, I saw he was reading the board outside my clinic, staring at it intently for a full 5 minutes. Let me explain something here. At our offline clinic, we primarily consult women and children in person, while for men, especially those who are educated and capable of reading, we take cases over the phone and send their medicines. However, if someone is elderly or uneducated, we don't turn them away, we provide medicines on the spot. So, naturally, I assumed this man might be illiterate, which is why he stood there reading for so long before deciding to come inside. Holding his sleeping child, he finally walked in and sat down. From my chamber, I could see him clearly. He didn't ask anything, instead, he immediately began narrating his symptoms. "Doctor, I'm in terrible pain. It's unbearable. I can't work or walk much anymore, it's been this way for a month. The doctors say it's a pinched nerve." Curious, I asked, "Is there any stress in your life?" He quickly replied, "No stress, doctor. I'm an architect." His words caught me completely off guard. Architect? He had stood outside reading the board for so long, and yet he walked in without asking any questions, straight into giving his case. It left me thinking, what's going on here? Is this man naive, or am I missing something? So, I gently probed further, "Do you have any recurring thoughts or feelings you want to share?" He hesitated for a moment, then said, "Yes, doctor. Sometimes, I see people driving around in luxury cars, Audis, BMWs, and I think to myself, that could have been me. I don't feel jealous, though. I feel happy for them. But it makes me realize that I want to achieve something bigger, too. I want to flourish, to grow my business. But?" I leaned in, curious. "But what?" "I'm jobless right now," he admitted, his voice trailing off. "I've had offers, but I didn't take them. I don't want a job, I want to do something on my own. I know I can do better." His words painted a picture of a man caught between dreams and inaction. His ambitions were vast luxury cars and a flourishing business, but his actions didn't align with his desires. He smiled throughout the conversation, but there was a shyness in his demeanor, almost as if he felt guilty for his inaction. His body language, however, told a different story, one of aggression masked by meekness. With one hand closed into a fist resting against his hip, he seemed like a storm brewing beneath a calm surface. It was a fascinating case, and I decided to prescribe Bartya Sulph 1 mg, 3 doses. What happened next left me astonished. After taking the medicine, he said, "Doctor, I feel relaxed now, but my leg has gone numb, and the pain is still there.
I asked him to repeat 3 more doses. And just like that, the miracle unfolded. His sciatica pain disappeared completely, as if it had never existed. This case left me deeply reflective. How quickly his body responded to the remedy. But why did Bartya Sulph work so well here? Let's delve into the deeper aspects of the remedy and its alignment with the patient's emotional and physical state. There's so much to learn from cases like these, where the patient's dreams, fears, and actions weave a story that guides us to the right remedy. Before diving into the analysis, let's first immerse ourselves in a story about responsibility and power. It will set the foundation for a deeper and clearer understanding of this case. Sometimes, a simple narrative can open our minds to the underlying layers of human behavior and help us see things from a fresh perspective. Let's begin. कहानी ये थी कि 2 ऑफिसर्स जो दोनों ही सिविल सर्वेंट्स थे रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के कुछ सालों के बाद उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात भी बड़े अजीब तरीके से हुई। मुलाकात ऐसे हुई कि एक नौकरी तलाश कर रहा था और दूसरा एक कंपनी बना चुका था। रिटायरमेंट के बाद उसे एक मुलाजिम रखना था। तो नौकरी तलाश करने वाला शख्स जब सामने बैठा उसके अपने ही दोस्त की कंपनी और अपना ही वही दोस्त जिसके साथ इकट्ठे कभी सर्विस में काम किया था, आमने सामने बैठे, तो उसने एप्लीकेशन उसकी देखी और उसने कहा यार कमाल है तुम आज नौकरी लेने आए हो। नौकरी मांगने वाले ने कहा यार आज कमाल है कि तुम मालिक बन के बैठे हो। उसने कहा कि आज मैं मालिक बना हूँ और आज तुम नौकरी लेने आए हो, लेकिन कहानी बड़ी पुरानी है। जिस कहानी ने डिसाइड कर दिया था कि तुमने मुलाजिम बनना है और मैंने कहीं पर नौकरी ख़त्म होनी है उसके बाद मालिक बनना है। उसने कहा कहानी कौन सी पुरानी है? उसने कहा याद करो हमारी सर्विस के दूसरे साल एक दिन हम दफ्तर से इकट्ठे निकले थे। दफ्तर से तकरीबन किलोमीटर का फासला तय हो चुका था। तो मैंने तुम्हें कहा कि यार याद आया कि हमारे कमरे का पंखा वो चल रहा था, वो बंद नहीं हुआ। तो तुमने कहा कोई मसला नहीं, चलते हैं। और उस वक्त तुम चल पड़े थे। मैंने ऑनरशिप की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने वापसी का सफ़र लिया था और वापस जाके मैंने उस पंखे को बंद किया था। मैं बंद करके फिर ज़िंदगी में गुम हो गया और तुम उस दिन वापस ना मुड़े, तुमने ऑनरशिप ना ली, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ना किया। आज देख लो कि जो किसी के काम को अपना काम समझ के कर रहा होता है, अल्लाह उसको मालिक ज़रूर बनाता है। और जो किसी भी काम को नौकरी की तरह, एक नौकर की तरह सोच के कर रहा होता है कि कोई मसला नहीं, किसी को पता नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नुकसान हो गया चुप कर जाओ, डंग टपा दो, मिट्टी डाल दो, खबर नहीं होगी, आज का दिन तो गुजर गया, कल देखेंगे, आने में देर जाने में जल्दी, ये मिजाज आपको आम मिलेगा। और फिर ये सब के सब लोग सारी ज़िंदगी गिला करते रहते हैं कि हम कोई एम्पायर नहीं खड़ी कर सके, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सके, हम कामयाब नहीं हो सके। हालात का रोना रोते हैं, गिला शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को बुला भला कहते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते कि उनके अपने अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो खुद एक गैर जिम्मेदार इंसान थे। जिम्मेदार इंसान वो होता है जो छोटा सा काम भी करता है तो पूरी जिम्मेदारी से करता है। वो छोटे से काम को अपना काम समझने लग पड़ता है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि अगर आप में बड़े लोगों वाली आदत आ गई हैं, आप बड़ा इंसान ज़रूर बनेंगे। अगर आप में खैर वाली आदत आ गई हैं, आप खैर वाला इंसान ज़रूर बनेंगे। और बिलखसूस अगर तरक्की करने वाली आदत आ गई हैं तो तरक्की से कोई आपको रोक नहीं सकता। सो तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा कीजिए। Analysis 1. Contradiction in actions and desires. Ambitious dreams, luxury cars, business success, but unwillingness to take action or accept job offers. Reflects an inner conflict between wanting success and avoiding effort or responsibility. Dignified. 2. Shyness with underlying aggression. Smiling and looking down indicates shyness or self-consciousness. Aggressive body language, clenched fist on hip, suggests suppressed frustration or determination. 3. Comparison with others. Observes others' success, BMW, Audi, without envy but feels a need to prove himself. Indicates self-awareness mixed with latent inferiority or unmet expectations. 4. Deflection of stress. Denies stress but reveals emotional turmoil when discussing joblessness and aspirations. Likely avoids acknowledging stress to protect his self-esteem. 5. Desire for autonomy. Wants to create his own path rather than working under someone. Indicates a strong desire for independence but lack of clarity on how to achieve it. 6.
seeking validation. Talks about big goals, possibly to seek approval or acknowledgement for his potential. 7. Physical pain as emotional manifestation. Sciatica may be a somatic expression of his internal struggles and stagnation. The Bartya self-remedy aligns with his personality, a mix of immaturity in decision-making, suppressed aggression, and a longing for growth. There's dependency and dignity with the pathology being not able to take a step forward. Same is happening in this mind too. Hence remedy Bartya Sulph. The doctrine of barium sulfate states that upon burning, it emits a pale green light, indicating that pale green, being less saturated, communicates a sense of hesitation or incompleteness, much like a fragile hope and fragility in growth. So, that's all for today. I hope this case has provided valuable insights that will help you in your journey with your patients and cases. Remember, as homeopaths, we hold the power to bring about healing and transformation through our understanding and dedication. Keep learning, stay passionate, and never stop growing. Together, we can make a significant difference in the lives of those we treat. May Allah bless you all with success, wisdom, and the strength to heal. May He guide your hands and hearts to bring comfort to those in need. Ameen. Thank you for your time and commitment. Let's continue to learn and heal with compassion. अल्लाह के नबी ने सब में फरमाया माज़इबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन, दो भूखे भेड़ियों को अगर किसी रेवड़ में बकरियों के छोड़ दिया जाए, वो भूखे भेड़िए मतलब भेड़िए और ऊपर से भूखे, उनको अगर बकरी के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो सोचिए कि वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उससे ज्यादा नुकसान माल और ओहदे की लालच आदमी के दीन को पहुंचाती। तो हमारा दीन ये भी कहता है हवस को कंट्रोल करो। माल की जो हवस है ना, वो नफ्स का तकाजा है, जिसको आप फितरत कह रहे हैं ना, वो असल में नफ्स का तकाजा है। और अल्लाह ताला के लिए नफ्स को मारना ही तो असल में इबादत है। वनहा नफ्स अनिल हवा फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपनी नफ्स को मार ले गया। नफ्स हवस परस्त होती है, उसको बहुत चाहिए और उसका कभी भरता नहीं है पेट। अल्लाह ने फरमाया इसको एक सोने का पहाड़ दे दो तो चाहेगा कि दो हो जाए, दो दे दो तो चाहेगा तीन हो जाए। हवस जो है वो खत्म नहीं होने वाली है कभी, इसलिए कनात सीखें। हवस इंसान को बेचैन करती है, कनात इंसान को मुतमईन कर देती है। वो गालिबन बशीर बदरी का एक शेर है ना कि हवस दिन रात फिरती है सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल लेती है। गरीब लड़की कान छिदवा करके तिनका डाल के मुतमईन हो जाती है, और हवस वो दिन रात सोने की दुकानों में फिर रही है, फिर भी उसको इत्मीनान नहीं मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अल-मुअती, अता करने वाला, नवाजने वाला, देने वाला। दुनिया में जो चीजें भी इंसान को मिली हैं वो सारी चीजें अता करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इसीलिए नमाज के बाद के अस्कार में एक बहुत अहम जिक्र है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह उस चीज को कोई रोकने वाला नहीं जो तू अता कर दे, वला मुअतिया लिमा मनअता, और उस चीज को कोई देने वाला नहीं जिसको तू रोक ले। तो अल्लाह रोकने वाला भी है, अल्लाह अता करने वाला। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाह बना देता है, और जिसके लिए चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मनसब को दूर कर देता है। इज्जत देने वाली जात उसी की है, जिल्लत देने वाली जात उसी की है। अल्लाह हर किस्म की चीजें अता करने वाला है, लिहाजा जरूरत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही सवाल करना चाहिए।